Okay, so see, first the topic of today's discussion is, you can note it down, it is India ready for e-vehicles? Because there is a major question that you think that India is ready, or still we need a lot of advancement in technology before we say that yes, India is ready for e-vehicles, right? So now the topic is this, and here, as I always say out, it is a question. You can say it yes also, you can go for no also, or you can say change your viewpoint according to the people who are participating. Very initial stages, introduction. The introduction would be very simple one. Good morning, everyone. The topic of today's discussion is India ready for e-vehicles? Then you have to give me an introductory line. So yes, I think that India is ready for e-vehicles, and e-vehicles would lead to less consumption of, you can say, the non-renewable resources like coal, petroleum, and all that. They would be less used on a state, and even the pollution and other things would be in control. So we think, and apart from it, I would say that the massive, that the technology, the lithium ion reserves which has been found in Jammu and that area, that is leading to the capacity that yes, India is getting ready. And the kind of massive, you can talk about the labor, the skilled labor we have, even that can counter to this question. So any one introductory line, it should not be very long one, but a brief one. Okay, why you feel that India is ready? And then you will say that now I open the house for discussion. Even you can say no, that we don't think so that India is ready, because there is still a lot of import of lithium ion depots and all that for the battery manufacture. Still, it is not there in India. We still need to import, and which is going to give a new massive amount is going to be spent on it. Second, still awareness is not there. Third, you can talk about that the vehicle's life, it is not that long. The average is not being that good. The roads is not that good. So there are a number of points which you can decide. And there, do remember, in introduction, you don't have to give 4 or 5 points at a time. Only 1 2 points at the start. That you will decide, आप हाँ में हो या ना में हो. Agree करते हो या नहीं करते. Then you will open the house for discussion. In between, you can have your arguments. Suppose अरुणा बोलती है कि ठीक है, नहीं मैं तो नहीं एग्री करती, इंडिया रेडी है. आप उस पॉइंट को चेंज भी कर सकते हो. अरुणा बाद में एग्री basis पे भी जा सकती है. Clear about it? And you have to say that I agree with you, I disagree with you, I would like to add a new dimension to it. I think the roads are the big problem. Still now we don't have a clean roads. You can say this is going to become a problem, because that is why the life of that e-vehicle, it reduces. कभी भी आपने देखा होगा 3 साल से, लेकिन अगर आपने दूसरी व्हीकल्स देखे हैं, फ्यूल व्हीकल्स देखे हैं, वो 12-12 साल 15-15 साल बहुत अच्छे से काटते हैं. So that is something that is there in your heads. And still, if I ask you, how many of us we have e-vehicles at our home? Fuel vehicles सबके पास होते हैं, e-vehicles they are less in number still, because of the basic awareness also you can talk about. So I gave you number of topics, number of hints how you need to speak on this topic. It's very important one. जैसे ये topic different dimensions में पूछा जा सकता है. Is India ready? How you can say importance of e-vehicles. E-vehicles के harmful effects भी बहुत है. अगर आपने recently news सुनी थी तो the recent, I don't know which the manufacturing company was that the car got fired, it got combustion and all that. So even that can be a big problem, right? So circuiting वो major वो है, तो बहुत issues नहीं है, वो भी आप discuss कर सकते. You can discuss it out in any one. Your 3 number, so obviously I'll give you less time for it. I'll give you 10 minutes for your discussion. Whatever the points you feel like, you can discuss in that category. And then there will be a conclusion. And conclusion can be, it is up to you, it can be a neutral one. But yes, we think that there India is still ready. आपने देखा iPhones के time पे manufacturing भी इंडिया ने करनी शुरू की है, and skill labor भी increase हुई है. But yeah, there are some kind of improvements which we can look forward. Awareness we can spread up, and through that, India would be majorly ready for us for the e-vehicle, for welcoming of it, and we can make a land of India for more into technical advance. तो कोई भी तरह का neutral ending करो इस topic का. Clear हुआ ये चीज? Intro, in between, and a conclusion one. Now I give you 3 minutes to think about this topic, write as much as you can. Okay. So is India ready for e-vehicles? Think about this topic in both the directions. Introduction can be done by Ayush and conclusion can be done by Aruna. Pushpandra, you just see it today, like how to introduce and conclude. Tomorrow you can get a chance to introduce and conclude also. आज अब in between participation करना. Okay. बहुत लंबे points नहीं देने. Hindi, English, any language is okay. Both are fine for me, right? So 3 minutes first, 125 by my side, 128 it will start, and 128 to 138 we will have the discussion. Then done. Okay? Go ahead, guys. Note it down.
Okay, I think the time is up. So I feel that Ayush, go ahead with the introduction now. Good afternoon, all. My name is Ayush Maude. I'd like to start today's discussion. Today's topic is India is ready for electric vehicle. So I believe that given topic is of current relevance, and in my opinion, India is manufacturing in JCB and successfully electric locomotives for so many years now, which are pulling thousands of thousand tons of load, and also. Uh, Electric vehicles like electric locomotives not only saved the conventional energy or conventional fuels, but it also saved the environment to from getting polluted. So now I open the discussion for all. Thank you. Aruna, unmute your mic before you speak. All of you unmute your mics, otherwise you will just be speaking. Yeah. I agree with you, Ayush, and we know that the electric vehicle is based on renewable energy, and it is totally in pollution free. And this is there is a major challenge in lithium ion battery is extracting of lithium ion, because we don't get lithium ion in India. We export from another country. So there are many challenges when we are ready, when we are launching electric vehicle. Yes, sir, I want to add one more point. Like e-vehicle are seen as crucial, like performing crucial role to save our environment because they produce zero emission in the tailpipe, and also uh, it is very necessary to tackling the air pollution, which is it is very high in our India. Uh, Yes, and I want to add another dimensions, like there is major challenge in temperature related issue. Like we know that in currently from one company, one electric vehicle is burst. So there is major challenge in temperature control, like lithium ion battery working on room temperature, and our environment continuously increasing the temperature. So this is issue for temperature related in electric vehicle. Yes, Aruna, but the thing is, by using this electric vehicle, it gives us it provides us a energy security, and also it mitigates the uh, risk of geopolitical issues related to this oil and fuel market. Yes, I agree with you. And we all know that the degradation of lithium ion battery is continuously increasing. So, what is the major challenges in lithium ion battery? Like charge, it has charging, discharging, no effect, no memory effect, and like 100 state of charge is also important. But we all know that in India sodium is mostly present. We don't extract from any country, so why we cannot switch on sodium ion battery, why only lithium ion battery? So this is also like many more research is required for the energy electric vehicle. Yes, but same like sodium ion, also magnesium is present in our country, mainly in Maharashtra.
which are taking that company MOIL is a one government organization which is currently deal which have take one deal with that Tesla company to give them a magnesium in uh, optimum source so that battery can produce for India e-vehicle. But Ayush, in case of magnesium, we don't know about what is energy density and power density. But after the lithium, energy density is maximum in case of sodium, and energy density, electric lithium and battery has more energy density. So that's why we use only lithium, and battery is very important for electric vehicle. Yeah, so batteries one constraint. So technological advancement is needed to uh, to make India ready for the electric vehicle. So Ayush, Aruna, Ayush and Aruna, I would like to, add some points at the ground level. That what we are facing problem in India is that the life of battery is 3 years. We have to replace it after 3 years. So as per price point of view, the person who is willing to buy e-batteries will estimate as compared to diesel and petrol vehicles. So if they conclude that e e-vehicle is still costlier than the diesel and petrol cars, and also with compared to CNG cars, so there is much more advancement to be done in e-vehicle side. And as they are not, they are costlier than the currently using conventional fuel vehicles. So we have to improve the battery life also, and also Yes, the so weight of the batteries that we are using in vehicle makes vehicle our heavier. So the advancement to be done in battery improvement also. So but yes, but Pushpendra, I want to take a light upon that. These are the second primary problems you are saying. I want to discuss that some secondary problems also. The thing like the charging station in our India is very less in number. That is very Yes, yes, major yes. problem that people are not going for electric vehicle, and also Hmm. infrastructure and also the mindset of the people. Like some people loves the sound of engine, which is like there is no sound in electric vehicle, and also the some wants more acceleration in their vehicle. Yeah, So electric vehicle acceleration. for that we have a technique that we can use the sound amplifier, and in a same vehicle we are getting hundreds of sounds of vehicles. So for that there is no problem. Problem is regarding the battery and the weight of the vehicle we have. We have to replace the battery after 3 years, and it costs much more than the vehicles that we are using in a conventional way. And yes, also Pushpan, you that's why I said that there are many more yes, researches yes. required for, and we know that lithium and battery has less weight and no memory charge effect. So we can charge any point at any point of charging, and we also know that there are some charging station in India is installed. So research are going on the lithium and battery, and degradation of lithium and battery is also research. Like no, um, uh, only degradation is not possible due to temperature and another effect. So I think I think more research is required for on the lithium and Yeah, Of Rona, battery. course, of course. technological advancement is needed already. Yes, yes, yes. Batteries not the only problem. Many things are there. Hmm. Like economical implications also need to be Uh, done. There Like are many investing advantages uh, also in that we like don't have any running cost is very less, and it is eco-friendly also. Maintenance is also very less. In conventional vehicles, we have a big engine and for which we have to take care of. But in yes, as we know that fossil fuel will not be so for so much longer time. yes, yes, So it reduce the dependency of the fossil fuel also. And yes, if we from now if we like adapting that electric vehicle, then according to some data by NITIE IO, it predicts that there will be reduction in the consumption of diesel and petrol but by but 150 megaton, which is but our topic is that is India is ready for the e-vehicles. Still, India is facing so many challenges for the
e-vehicles. Yes, we want e-vehicles in India, but India is facing so many challenges, and we have to work upon it for the upcoming years so that the conventional vehicle can be replaced by the e-vehicles. So dependency on the conventional fuels that are depleting day by day should be switched on to the renewable sources also. Yes, My yes, friend yes. Ayush said that like infrastructure is like when recently I got the news like when we take break in electric vehicle, then it has property of charging. So this is good for India. And like in a wheel they have different type of technology, so they when people can take break, then battery is charging. So it is this technological advancement in electric vehicle. So I think India is ready for the not totally but partially we can say that India is ready for electric vehicle. One more Yes, problem is there also that like we can't go above no, 200 no, kilometers range. we we know that India, we also know one quotes that India is a elephant. It will not, it will go slowly, but surely it will adapt. Same like that, it will adapt slowly, but surely it will adapt. So, according to this Paris Agreement of climate change, that in India promises that it bring down its share global emission by 2030, and also I said already that NITIE Aayog also predicted some reduction in the carbon emission and uh, that conventional energy consumption. So yes, we now India is facing problem, but uh, mm, just like Ola Scooty and this electric cars, the initiative taken by Tata Motors, they are also launching electric cars. So many of people are now slowly adapting towards that electric vehicle. Yes, yes, government has to give subsidy to these Yes, vehicles yes, so that people can adapt also. yes. It Many will help incentives them. and policies Yes, already done by a government. So yes, it is true that currently India is facing some yes, problem because it is new technology. So it takes time to evolve. yes, yes. So I want to, can I conclude? Yes, please continue. Uh, Okay, as okay, friends, I am glad to conclude the discussion. Like we all discuss very good and effective point. Like my friend Pushpen said that like environmental issue, battery replacing is one environmental issue, and like there are many more many more challenges in extracting in lithium, and is one of challenge in India. And like we had good discussion on lithium and battery. Thank you. Okay. So first thing, it was a very good group discussion because none of you have actually read about it. एक ही चीज को कितनी बारी रिपीट करके बोला है, बैटरीज पे चले गए है ना, क्योंकि और कोई पॉइंट ही नहीं याद आ रहा था हमें. Yes, ma'am. इंफ्रास्ट्रक्चर बोल देते कितने पॉइंट्स और पढ़ के नहीं आए क्यों? Reason of not studying when I gave you the topic that next time we are going to study on e-vehicles. It is okay that Pushpendra, it was the first time, but rest बाकियों का क्या रीजन है? अरुणा, आयुष, और अरुणा ने एंड कैसे किया? इट वाज अ गुड डिस्कशन. आई ऑलवेज टोल्ड यू नेवर से गुड डिस्कशन. सच टॉपिक्स इंडिया रेडी है कि नहीं रेडी है उसमें, ये तो बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है. अच्छी क्या हुई है आपकी डिस्कशन? ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करने हैं. आई टोल्ड नंबर ऑफ टाइम्स. पहले तो ये टॉपिक Okay. को प्रिपेयर करो बिकॉज नंबर ऑफ टाइम्स दिस वाज एन इम्पोर्टेंट नीड. आपने देखा है कि आजकल ये चल रहा है. किसी ने बात की इंडिया में अगर व्हीकल्स ई व्हीकल्स आ जाते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है बिजली किन किन के घरों में जाती है. Yes, ma'am. इलेक्ट्रिसिटी कट्स आर देयर. चार्ज कैसे Yes. करोगे? इलेक्ट्रिसिटी कट. दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट होते हैं, चोरियां होती हैं इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट की. पिछली बार देखो कितना राइज हुआ था. आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 16 बिलियन के पास कुछ इतना था. आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट अमाउंट. इतने इतने इंटायर कंट्री में से इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट होने की न्यूज आ रही है. तो अगर इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट होगी, तुम लोगों के घर में कोई चार्ज करेगा, तुम्हारे बिल्स बहुत आने शुरू हो जाएंगे. वो भी रीजन है. ठीक है. तीसरी चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर. मैंने लैंड की बात की थी. इंडिया में जो लैंड्स है, कैसी लैंड्स है? खड्डे हैं लैंड्स में.
प्रॉब्लमेटिक है yes कि ma'am, बहुत स्मूथ लैंड्स है लाइक फॉरेन कंट्रीज में वो व्हीकल का सर्वाइवल इसलिए बढ़ा है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके जो बीच में आई थिंक चार्जिंग स्टेशंस भी बहुत है। इंडिया में कितने चार्जिंग स्टेशंस देखे हैं अभी तक आपने? हैव यू सीन नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशंस? अभी one तो or two. सीएनजी आई थिंक हर जगह पे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के भी बहुत ज्यादा स्टेशंस नहीं है, सिर्फ फ्यूल स्टेशन ही मैक्सिमम है। तो ये तो भी शॉर्टकमिंग्स चल रही हैं। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम स्पीड, लोगों को बहुत होता है कि एवरेज माइलेज कितना मिलेगा, स्पीड कितनी मिलेगी, कितने किलोमीटर रन कर सकती है, लाइफ कितनी अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ। पुष्पिंदर ने एक पॉइंट दिया था बजट के रिलेटेड, राइट, कि Yes पुष्पिंदर ने ma'am, बोला कि अगर उसकी लाइफ उतनी है, उतना अमाउंट हम स्पेंड कर रहे हैं, वो कॉस्टली पड़ता है। ट्रू, बिकॉज ना तो उसकी लाइफ इतनी लंबी चलेगी। हम जो व्हीकल लेते हैं, नाउ टेल मी वेरी क्लियरली, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट ई व्हीकल्स एट योर होम? No, no ma'am, No, ma'am. No one. That is the kind of awareness, and this could you raise at your this only. That if we compare, यही group discussion में point दे सकते थे, हम आपस में contribute करते हैं, discuss करते हैं yes that how ma'am, many of you we have actually this e-vehicles. So the answer would be like quite less. So this is, you will say, being the youth also, we have very much less awareness. We only are not encouraging it out. तो obviously awareness लोगों में, गरीबों में कैसे जाओगे आप लोग? ठीक है, तो अवेयरनेस करना है। मैंने अभी 4-5 पॉइंट्स बता दिए जो यू हैव टू रीड इट आउट अबाउट इट। अब अरुणा ने तो बोल दिया लिथियम आयन बैटरीज ही नहीं है इंडिया में। जम्मू वाली साइट पे एक्सपोज देयर वाज अ न्यूज आल्सो, यही करंट से रिलेट करना होता है, दैट देयर वाज अ एक्सपोजर दैट वाज बीइंग फाउंड। हाँ, कम स्टोरेज है बट है हमारे पास, ठीक है, ये भी है। सेकंड, इलेक्ट्रिक बसेस देखिए चलती है हर स्टेट्स yes में, ma'am, मेट्रोज में चलती हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है ना, yes दैट इज ma'am, इंक्रीजिंग ऑफ ई व्हीकल्स। तो गवर्नमेंट हमें क्या कर रही है? हेल्प करने की कोशिश कर रही है अबाउट ई व्हीकल्स एंड ऑल दैट। थर्ड, अगर yes तुम ma'am, बात करो, हमारे पास स्किल्ड लेबर बहुत अच्छी है। अगर हम चाहें तो हम स्किल्ड लेबर को एक अच्छी यूटिलिटी में यूज कर सकते हैं। वो भी तुम्हारा पॉइंट बन सकता था, बट आई डोंट नो तुमने क्यों नहीं वो पॉइंट यूज किया। जैसे अब बहुत कंपनीज हैं, मारुति सुजुकी हो गई, या फिर आई विल कॉल इट आउट महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, हीरो, Reliance. ऑल इन कंपनीज ने ई व्हीकल्स पे बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की है। अगर ये Yes, इन्वेस्ट ma'am. कर रहे हैं मीन से दे वांट समथिंग, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो बहुत गुड, मतलब एक रिनाउंड कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर रही है, और ऑब्वियसली दे टू वांट टू एंटर इनटू दिस लीग, और उसी से क्या होगा? प्रमोशन होगी। तो सरकार हमें ई व्हीकल बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो इसमें एंटर कर रही है। हमारे पास कुछ मेजर जो लिथियम आयन का वो आता है स्पेंड, जो बैटरीज का यूसेज है, वो भी हमारे पास कुछ है, और प्लस हमारे पास लैंड स्किल, लेबर स्किल भी बहुत अच्छी है। तो ये चीजें हेल्प करेगी, प्लस हमें क्लीन एनवायरनमेंट में जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज दैट इज द ओनली एन अल्टरनेटिव टू गेट क्लीन एनर्जी अल्टरनेशन। हमारा ग्लोबल वार्मिंग लेवल, हमारा क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हो रहा है, वी नीड टू एंटर इनटू दिस टॉपिक, इसलिए इंडिया इज रेडी। ठीक है, अभी तुम्हें मैंने बहुत बारीक में, बोलते हैं ना, जैसे बहुत कम कम पॉइंट्स देनी है, एटलीस्ट मिनिमम ऐसे पॉइंट समझाएं ताकि तुम्हें याद रहे। चोरी का पॉइंट, थेफ्ट का पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का पॉइंट, ये याद रहेगा? नहीं हो सकता भाई, अभी तो रेडी नहीं है। फिर एंडिंग कैसे होनी थी इसकी? एंडिंग 2000 यूनियन मिनिस्टर ने भी कोट किया था, बाय 2030 इंडिया जो है वो अवेल करेगी, ज्यादा मैक्सिमम आएंगे, यही पॉइंट बोलना था। दैट यस, देयर आर सम शॉर्टकमिंग्स, स्टिल वी हैव लैकिंग इन नंबर ऑफ थिंग्स। ये मैंने आपको अभी बोला है, चार्जिंग स्टेशन में, या और हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, या कंपनीज को और होना पड़ेगा, प्लस अवेयरनेस इज मोर नीडेड। But still, you will say it out as slowly and steadily, as our union minister has also quoted that by 2030, that India would be having more progressive this arena for this electric vehicles, and so India is ready for that. But yes, there are shortcomings which will take time to improve, and we are into the stage of that. एक पॉजिटिव एंडिंग पे ऐसे चीजें छोड़ते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन होगा, क्या इंडिया में यू विल कॉल इट आउट एज लिटरेसी रेट इंप्रूव हो जाएगा, विमेन एम्पावरमेंट प्रॉपरली, हर पर्सन एजुकेटेड हो जाएगा? तो इसका ये तो नहीं बोलोगे ना नहीं हो सकता, पॉजिटिव एंडिंग छोड़ोगे ना, होप पे छोड़ते हैं कि हाँ yes हो ma'am, सकता है। तो जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव, अ न्यूट्रल एंडिंग, एंड यू कैन गो फॉर दैट। क्लियर हो ये बात? जब yes भी ma'am, कोई टॉपिक Yes. देती हो प्लीज पढ़ के आया करो, इट्स नॉट लाइक दैट तुम लोग पढ़ के भी नहीं आते हो। अब हमने 4 डिफरेंट डायमेंशंस कवर कब की हैं अभी तक, ठीक है, विच वर वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारे इन्वायरमेंट वाली एक हमने कवर की थी कि क्लाइमेट चेंज, उसी को आप रिफ्लेक्ट करते, वही पॉइंट इसमें भी काम आ सकता था। जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस तरह से हमारा जो हमें जरूरत है कि ई व्हीकल्स की तरफ मूव करने की, वो पॉइंट बोलते हैं। सेकंड चीज हमने एक बारी की थी आपको, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन पे भी लिंक अप आता है। सेकंड वाज दिस। थर्ड मैंने एक टॉपिक चूज किया था, दैट वाज व्हिच वाज थर्ड टॉपिक, आई डोंट रिमेंबर इट आउट। So education is important or not
to being हाँ, successful. ये एग्जैक्टली अभी 4 दिन पहले पूछा गया पीएसयू में, इज एजुकेशन इम्पोर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ और नॉट, कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस को यस में, पॉजिटिव में छोड़ते हैं, ठीक है। आज का हमारा एक टॉपिक था कि इज इंडिया रेडी फॉर ई व्हीकल्स और नॉट। अब इसमें ई व्हीकल्स के प्रॉस कॉन्स अलग से टॉपिक आ जाए तो भी रेडी होंगे। इज इंडिया रेडी बाय 2030, विल इंडिया बी एबल टू अचीव द टारगेट ऑफ ई व्हीकल्स, हाउ वी कैन गो फॉर ई व्हीकल फ्रेंडली इन्वायरमेंट। एक टॉपिक को पूछने के तरीके 3-4 हो सकते हैं, फिर पॉइंट्स डिफरेंट रहेंगे। क्लियर हुआ? व्हाट आई लाइक्ड अबाउट इज अरुणा एंड आयुष इंट्रोड्यूस किया, वही ब्लफ करना शुरू कर दिया। आई डोंट नो व्हाई, फिर से रीजंस व्हाई। ब्लफ नहीं करना, अटकना नहीं है, कॉन्फिडेंटली फ्लुएंसी से कैरी करना है। पुष्पेंद्र का एक आधा पॉइंट था, पार्टिसिपेशन कम थी बट इट वाज ओके। आपका फर्स्ट है, यू विल बी एबल टू रिकॉल इट आउट किस तरह से करना है। टॉपिक्स Yes, थोड़ी सी स्टडी करोगे, जनरिक अवेयरनेस पढ़ाओगे, उससे और इजी होता रहेगा। लास्ट इज अरुणा। अरुणा ये नहीं बोलना लिथियम आयन तो है ही नहीं हमारे पास तो ये भी खत्म है, सब कुछ ही खत्म है हमारे इंडिया में, ये नेगेटिव नहीं बोलते हैं, ठीक है। प्रॉपर थोड़ा चैनलाइज से बोलना है, पॉइंट्स थोड़े अच्छे बोलने हैं, कंटेंट वाइज वर्क करना है, ठीक है। क्लियर विद ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम? मैम नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक वी कैन हैव इट ऑन सोशल मीडिया, इजी Social वन। एक media. हमने ये भी किया था ओटीटी वर्सेस थिएटर, वो भी कर Yes, चुके हैं हम। तो कल हम सोशल मीडिया पे करेंगे। आई गिव यू सम टॉपिक ऑन सोशल मीडिया। डन? Okay. इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। सोशल मीडिया इज समथिंग यू कैन स्पीक अबाउट इट वेरी इजीली। तो आई वांट वन टू बी एटलीस्ट ऑन वोकल्स। इजी रहेगा टॉपिक बट वोकल्स होगा। जितनी ज्यादा पार्टिसिपेशन, सी बेसिक पर्पस ऑफ ग्रुप डिस्कशन राइट नाउ इज कि आप बोलना शुरू करो। Yes, जितना ma'am. सारा पार्टिसिपेशन पता चले आपको कहाँ करनी है, कैसे करनी है। डन? विल डिस्कस अबाउट इट। सो विल Yes, मीट ma'am. टुमारो अगेन एंड आई गिव द टॉपिक। द हेडिंग इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में कुछ भी आ सकता है पर Okay, okay. ठीक है, इट इज नॉट एग्जैक्ट टॉपिक, मैं कभी रिवील नहीं करूंगी। आई जस्ट गिव यू द हेडिंग कि सोशल मीडिया पे आएगा। जैसे एजुकेशन था टॉपिक, एजुकेशन में मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूछ लिया था, तो वो हेडिंग है। हेडिंग के बेसिस पे सर्च करना जीडी टॉपिक्स ऑन सोशल मीडिया, हेडिंग्स मिल जाएंगी कुछ ना कुछ, कुछ भी Yes, ma'am. पूछूंगी मैं। बस आपको किस तरह से करना है, सोशल मीडिया के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, सोशल मीडिया में क्या क्या आ जाता है, क्या सेंसर बोर्ड को काम करना चाहिए सोशल मीडिया में, कुछ भी ऐसा टॉपिक इंटरेस्टिंग होगा जो आपको एक टॉपिक बहुत सेगमेंट्स में कवर करेगा। दैट विल बी आवर टारगेट। Clear? Yes, ma'am. Done? Yes. Chalo. Yes, Okay, guys. So right now.